हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, जय जोहार। હું મનોજ કુમાર સીમાલ બાંસવાડા રાજસ્થાનથી। આજે હું તમારા કને જો વિડીયો લઈને આવ્યો હું તમારે ખૂબ જરૂરી है देखवी। सरकार, भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार जो नियम काढ़्यो है कि जो लोग गलत तरीका थी घऊं उठावी रही, चाहे तमारे पैसा वाला हो, तमारे गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, गवर्नमेंट नौकरी हो, कोएट वाला हो, चाहे कोई भी आदमी हो जो सक्षम थईने भी फोकटना घऊं उठावी रह्यो है, जो 5 किलो घऊं महीने फोकटना लई रह्यो है, एना पर सरकार कार्रवाई करवा वाली है। सरकार आज साफ न्यूज में कही दीधुं है कि 29 तारीखना बाद सबना माटे कार्रवाई थायेगा। हालांकि फरवरी में 29 तारीख नहीं आती, लेकिन जो भी दाड़ा तमारा बाकी है एना दाड़ा अंदर तमे तमारू नाम कटावी लो, नहीं तो आ लोग तमारा माटे कार्रवाई करीने 29 रुपयाना हिसाब से 29 रुपये किलोना हिसाब से तमारा कने पैसा वसूल करेगा। हवे आ सरकार तमाराथी पैसा हितर वसूल करेगा, एनो तमने तरीको बताड़ी रहो कि 2024 में जो लोग अपने बुढ़ापा वाली पेंशन उठावी रहा था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, एना में लोगे शू कर्युं हतुं कि ज्यारे पेंशन चालू थई तो फोटोशॉपना माध्यमथी गलत तरीकाथी आपणी जन्म तारीख बदलीने सरकारने वताड़ीने या फोटोशॉपना माध्यमथी आ मिलीभगत करीने जन्म तारीख गलत वताड़ीने આપણે 50 सालना हन આપણે 60 वर वताड़ीने पेंशन उठावी रहा था। हवे आ साल सरकार शू कर्युं कि केंद्र सरकारनो जो आधार सेंटर हतुं एना कनेथी डाटा मांग्यो। डाटा मतलब विवरण कि आना आदमीनी जन्म तारीख शुं है, आना आदमीनो मोहल्लो शुं है, एड्रेस शुं है, कि अमारा कने जन आधार में जेटला लोग आधार कार्ड थी जोड़ेला ही एनो सबनो डाटा तमे अमने आलो। तो आधार सेंटर वाळाए हेज तो डाटो लईने मैच कर दीधो। केमथी कर दीधो? जन आधार ने और आधार कार्ड नो डाटो बे एक मैच थई गया। हवे ज्यारे आ बे डिपार्टमेंट एक थई गया तो तमे आ जन्म तारीख बताड़ी है 60 साल ऊपर, वहां तमारी जन्म तारीख बताड़ी रही है तमे 50 वर्षना हो, तो आ बे डिपार्टमेंट एक थई गया तो हेज गलत तरीका थी पेंशन उठावा वाला पकड़ी गया। और तो गनीमत रही कि सरकार तमने नोटिस नहीं आल्यो। आ एक सरकारनी भल मानस है कि तमने नोटिस नहीं आल्यो, नहीं तो तमारा कने लाखों रुपया आ भाजपा सरकार तमारा कने वसूल करती। बस आज तरीको अब बार फिर आ तमारा गौनी तारीख खत्म थावारी 2 दाड़ा में एना बाद आ लोग अपनावेगा। हवे आ सरकार तमने हितर पकड़ेगा, एनी पूरी हूँ तरीको है हूँ तमने समझाड़ी रहा हूँ। आ सरकार हूँ कही रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो गाड़ी घोड़ा आपणे खरीदा 4 व्हीलर बड़ी बड़ी गाड़ियां, एना 2 डिपार्टमेंट वाला ने पूछ्યું है कि अमारा काने जन आधार में जेटला लोग राशन कार्ड में फ्री में अनाज उठावी रू 5 किलो वाळू, एना में जेटला भी लोग तमारा काने रजिस्टर्ड है जो हमारा जन आधार में है, एना सबनो तमे डाटा बताड़ो। एना सबनो तमे डाटा आलो, अमे आने बे ने मर्ज करो ताकि अमने आधार कार्ड थी खबर पड़ी जाए कि आना आदमी कने केटलो रुपयो है, केना कने गाड़ी है, केना कने सरकारी नौकरी है, कि कौन कोएट में रही रू है, आना कने केटला रुपया है, फिर भी आ 5 किलो घऊं उठावी रो, और कौन 1 लाख नी इनकम ना ऊपर है जो आ फ्री में घऊं 5 किलो नो लई रो, जो गरीबों हकनु है, एना सबना खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हवे हूँ करेंगे है तो बे डिपार्टमेंट हैं, आना 2 डिपार्टमेंट कनेती है तो डाटा मांगेगा, पूरी जानकारी लेगा कि राशन कार्ड में कौन कौन जोड़ेला ही, आना सब ना आधार कार्ड की जानकारी आलो। हवे तमे सोचोगा कि इनकम टैक्स वाला ने हितर खबर पड़ेगा, आ परिवहन विभाग वाला ने हितर खबर पड़ेगा, तो हूँ तमने बताड़ू। सबथी पहले सरकारे 4 महीना पहले तमने हूँ कीधुं आधार कार्ड की केवायसी कराओ, आधार कार्ड की केवायसी कराओ। तमने अमदावाद थी कोएट थी बोलावी ने सबने आधार कार्ड की केवायसी थई गई। हवे तमारी आधार कार्ड थी केवायसी थई गई, हवे तमे दिमाग लगाड़ो। पेन कार्ड तमे बनाव्यो केनथी? आधार कार्ड थी। एक 4 व्हीलर केनथी लीधी? तमे आधार कार्ड थी। आधार कार्ड थी बण्यो पेन कार्ड, पेन कार्ड थी तमे पेन कार्ड और आधार कार्ड थी ली तमे गाड़ी, पेन कार्ड थी तमारू बैंक एकाउंट, पेन कार्ड थी तमारा हेता काम, और आधार कार्ड थी तमारा हेता काम। पेन कार्ड आधार कार्ड ने हवे ई 2 डिपार्टमेंट वाली ना है तो डाटा आली रही राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम डिपार्टमेंट वाला ने। જ્યારે આ है ता 3 डिपार्टमेंट एक थी जाएगा तो तमारी जटली भी जानकारी है, तमारी जटली भी जानकारी है इस सरकार ने अपने आप खबर पड़ जाए, कहाँ जावानी जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तमे एक बात नोट कर लीजो, आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, हूँ भणेलो आदमी हूँ, हूँ अंधभक्त नहीं हूँ। मने खबर है कि हूँ भी ऑनलाइन काम करूँ, मारे भी मित्रों એટલે મને ખબર है तमारा कने हितर पैसा वसूल करेगा। 29 रुपये किलो ना हिसाब थी ज्यारथी तमे कहूँ उठावी रहो तारथी लईने अब्बार तक हेत्ता रुपया तमने भरवाय, तमारा टापरा ने घर बेसी जींगा, याद कर लेजो। એટલે માં જો 2-4 દાડાનો તમારે મોકો મળ્યો है
તમારું નામ કટાવી દો, કાં જવાની જરૂરત નહીં, તમને નહીં સમજમાં આવતી है હું તમને એક આઈડિયો બતાડું, મોબાઈલ में જવું હોય, वहाँ જઈને તમારે ખોલવું, वहाँ જઈને રાશન કાર્ડ નાખવું હોય, वहाँ જઈને તમારું નામ હટાવવું હોય, फिर તમારે वहाँ સ્ટેટસ દેખવું હોય કે મારું ફાઇનલ નામ કટ્યું હોય, એનું આવેદન થયું કે નહીં થયું હોય, એ सब દેખીને તમને આવેદન કરી દેવું હોય. ડિપાર્ટમેન્ટ નહીં જોગા તો મોબાઈલથી બી તમે કરી શકો. એ તમે ભણેલા નહીં હો, તમને નહીં સમજમાં આવતી है तो આપણે पाए जो भी कार्यालय है, रसद विभाग कार्यालय, बाजार में, गांव पंचायत है, वहाँ જઈ ને શુભ સાફ આપણું નામ કટાવી દીધું. જો તમે નામ નહીં કટાવ્યું ને આની ભજનલાલ સરકારે અગર કાર્યવાહી કરી तो તમને એક छोटो सो आइडियो बताड़ो. अगर एक आदमी महीना 60 किलो गेहूं लई रहो है तो साल भरना 720 किलो गेहूं था. और 720 किलो ना हिसाब से તમે 29-30 રૂપિયા भी ગણોગા તો રૂપિયા 21-22 હજાર રૂપિયા થઈ. સમજી રહ્યા મારી વાતને? એટલે હવે તમે દેખી લો, 4 થી ઘઉં ઉઠાવ્યા ને 12 તકના રૂપિયા તમને ભરવા હી તમે ભરી લોગા. એટલે તમને કહી રહ્યો હું, ચૂપચાપ જઈ નામ કટાવી દો. આ 2 દાડા હી 2-7 દાડામાં જો બી નામ કટાપાય જલ્દીથી જલ્દી જઈને આપણા નામ કટાવી દો, તમે બચી જાઓગા. નહીં તો તમને કોઈ બચાવી શકતું નહીં. અને પછી બાદ મેં તમે બાપુ અને ભાઈ બાપુ ને જાન પहचान લગાડોગા, સબ દોડોગા, પણ કઈ કામ નહીં આયા, કેમ કે તમે ઓનલાઈન કાં ને કાં પકડી જાઓગા. આ મને એટલે એમ ખબર છે કે હું ઓનલાઈન કામ કરી રહ્યો ને. જ્યારે આ પેન્શન બંધ થઈ લોકોની ને જ્યારે અમે પેન્શનનું આવેદન કરવા ગયા, લોકોને સાલ ભર બાદ પેન્શન અંગૂઠો લગાડીને આદમી કેટલી ઉંમરનો હે, જેમ અંગૂઠો લગાડવા ગયા તો કમ્પ્યુટર अपने आप કહી દીધું કે આ આદમી તો 50 સાલનો હે ને 60 વર્ષની પેન્શન ઉઠાવી તો કમ્પ્યુટર अपने आप માં લખેલું આવી જાય કે આના આદમીનો જન આધારમાં તારીખ અલગ હતી ને આધાર કાર્ડમાં તારીખ અલગ હે, એટલે મારી પેન્શન બંધ થઈ ગઈ. બસ આ જ તરીકાથી આ કાર્યવાહી તમારા માટે કરવાવાળા. બાકી તમારે જો કરવું તમે કરો, નહીં કરો તો સુલામે જો. હા તો હું તમારા ગામનો આદમી હું તો તમને હાંસી વાત સમજાડી રહું. અગર સરકાર કાર્યવાહી કરી તો હું તમને કહી રહું, તમને રૂપિયા ભરવા પડેગા ને લાખો રૂપિયા તમારે ભરવા પડેગા. આ 2 દાડા મેં નામ કટાવી લો. જય શ્રી રામ, જય જોહાર, સલામ વાલેકુમ. તમે જો સમજો, જય ભાષા મેં સમજો, મેં તમને સમજાડી રહું. રામ રામ, રામ રામ. મનોજભાઈ નું તમારે રામ રામ. હવે देखो, તમારે મોબાઈલમાં જવું હોય, ક્રોમને ટચ કરવું હોય, ક્રોમ ટચ કરોગા, वहाँ લખવું હોય ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટ. फूड डिपार्टमेंट ने टच करवू है, फिर आगाड़ी बढ़ेगा. जे मैंने टच करोगा, फूड डिपार्टमेंट राजस्थान जयपुर खुली गयू. फिर इन्हें टच करोगा, आगाड़ी बढ़ोगा. आ देखो भजनलाल जी फोटो आई रू. वहाँ से नीचे उतरोगा, वहाँ लखेलू आएगा नाम हटाने के लिए आवेदन करें. देखो हमें ने हमें और ऊपर इन्हें टच करोगा, 2 पॉइंट लखेला आएगा नाम हटाने के लिए, स्टेटस देखने के लिए. इन्हें टच करोगा, राशन कार्ड मांगेगा. हाँ जिलो चुनो पड़ेगा. जिलो चुनी ने પછી તમારી સાઈડ में राशन कार्ड नंबर લખવું પડેગા. પછી રાશન કાર્ડ નંબર તમારી લખોગા, પછી આગાડી ખોજે એમ લખવું પડેગા. ટચ કરવું પડેગા. એને ટચ કરીને આગાડી बढ़ोगा, તમારું પરિવારનું નામ આવેગા, એને સિલેક્ટ કરીને આગાડી बढ़ી જવું હોય. તમારું નામ કટવાલે આવેદન થઈ જાયગા. પછી પાછું પછાડી આવવું હોય. પાછું પછાડી આવીને देखो આ તમારે ફેર આ નીચે બીજો પોઈન્ટ આવી રહ્યો સ્ટેટસ દેखें, वहाँ જઈને ફેર ખોલવું પડેગા. वहाँ જઈને ફેર તમારે वहाँ भी राशन कार्ड नंबर લખવું પડેગા. જેમ તમે રાશન કાર્ડ નંબર वहाँ જઈને લખોગા तो ये તમને બતાડી દેગા કે તમારું આવેદન થયું કે નહીં થયું કે ગલત થયું. અહીં લખોગા, આ देखो आना में स्टेटस चेक करो, राशन कार्ड नंबर तुरंत चेक करजो. वहाँ बता देगा तुम्हारा आवेदन आगे भेज दिया गया है. પછી 5 થી 10 દાડા તમારું નામ ઓટોમેટિક કટી જાયગા. આવી વાત સમજ में नहीं समझ में आवे तो आए पाए वगैरह अच्छा भणेला आदमी ने पूछी लेजो.